Well, let's go to habit number 3, which I have little bit touched upon already. It's read random. Well, there are two meanings of read random. If you have heard my TED talk, where no, these are the golden words my elder brother told to me since childhood, that whenever you are stuck up with a question, what next? Read random. Just read random. बोला था कि we so called highly educated people ना, हमको ना थोड़ा ज्यादा मस्ती रहती है. Everything should be labeled, everything should be categorized. No, he is vegan, he is Hindu, he is Modi or anti-Modi. No, ऐसे मतलब labeling करते. He is introvert. So once you label, the problem is that once you label yourself something, then even if you want to do something different, your subconscious mind doesn't allow you to do it. Now, although I am on the verge of going towards vegetarian diet, I will not call myself as vegan because I don't want to tag myself as vegan, because maybe one day I would like to eat meat. Are you getting my point? Never tag yourself or label yourself and identify yourself with that. Conclusions खुद के conclusion निकालते हैं हम. No. वैसे देखा जाए तो I am an introvert. But looking at me right now, who will believe that I am an introvert? Right? But I was. My mom used to say that जब घर में when I was a child, घर में मेहमान आते तो मैं भाग जाता था अंदर बेडरूम में डर के मारे. That scared I was. But look at me today. Had I labeled myself as introvert, आज ये session नहीं होता. So why I'm saying this is about read random, that don't fall in love with a particular category of books. And that comes by labeling yourself. I'm a businessman, so why should I read non-business books? I'll read only books which will make me money. No. बिजनेसमैन बोलेगा मैं हैरी पॉटर क्यों पढूं? या कुछ लोग बोलते आई रीड ओनली फिक्शन, मुझे वो सेल्फ हेल्प वगैरह नहीं, मैं सिर्फ फिक्शन. दैट्स अ रॉन्ग वे. डोंट फॉल इन लव with a particular category of books. I made this mistake. When I was on stock market, I must have read more than 300 books only on stock market and investments. जितने भी ये वॉरेन बफे से लेके पीटर लेंच एंड जॉर्ज सोरोस एंड क्या नहीं, राकेश झुनझुनवाला and whatnot, I've read everything. Now I don't regret reading them, but then my knowledge was very narrow. I was an expert in a very small area, and no wonder uh, no I did not come up with creative ideas, because randomness mein randomness is the mother of creativity or innovation. Combining two random things creates an innovative product. Do you know this? Check out all the innovative products around you. They're always a combination of two random things. Now, you won't believe, guys, some 10-15 years ago, a guy who came out with an idea of putting a camera in a mobile was sacked by his boss for coming up with such a stupid idea. Can you believe? But I can empathize with that boss. अगर मैं उसके जगह पे रहता शायद मैं भी हंसता. What a stupid idea. A camera, there's a dedicated device for clicking pictures. Why the hell will people click pictures from mobile? Mobile is made for calling and at the most SMS, right? See, with hindsight, it is easy to say it's a hit idea, looking backward. But looking forward, just throw back yourself 15 years ago. No, camera, mobile, कुछ लेना देना ही नहीं ना एक दूसरे का. They're two completely different instruments. But today, we take more selfies than calling. So the most hit ideas were the stupidest ideas initially. Okay, every idea is a stupid idea until it's a hit. Okay, so now let's extend this stupid idea of putting a mobile in a camera in a mobile. We know it's a very sensible idea now, right? It's a super hit idea. How about putting a camera in a fridge? ऐसे ही चलो सोचते हैं अभी. Nonsense, stupid idea. Let's try to make sense out of it. Today, there is something called juvenile diabetes. 14-15 साल के बच्चों को diabetes, obesity is very common. In fact, nowadays obesity is not considered as disease only. ये नौबत है, मतलब ये वाकई में कलयुग है, ऐसा लगता है मुझे. Now,
And most of the parents are working parents these days. How about putting a camera in a fridge so that the child who is at home alone, whenever he or she opens the door of the fridge to eat something, the camera will take videos or pictures and send them to his parents in office on the mobile. Makes sense? To keep a check on the eating habits of the child at home. Wow, it's $1 million idea now. किसी को चाहिए तो ले लो. I won't claim any royalty. You never know, ऐसे फ्रिज आ भी जाएंगे 5 साल के बाद बाजार में. Right? पेटेंट कर लो किसको करना है तो. So what I'm saying is, creativity comes from combining two random things. And so when you read Chanakya Niti and Harry Potter, try to find some crazy combination between the two. I know it sounds crazy. Chanakya Niti and Harry Potter, right? But you know what? The real power of intelligence doesn't lie in collection of information. Real intelligence is connection of information. Connecting those disparate dots. Steve Jobs' famous phrase, connect the dots. Yeah. I successfully connected my dots backward. Yeah, I have multiple passions, which I connected nicely to come out with the new idea of Booklet guy. See how I connected all my multiple passions. So I like to read. Okay, I may not be the best reader in the world, but I'm a passionate reader, and I read better than most of my friends. All right, hope you agree. Second, I also discovered that I have passion to speak. There is some teacher within me. That's what I'm doing right now. Right, I'm teaching you. Yeah. So there is a secret teacher within me, passionate teacher who likes to explain whatever I learned recently from a book. In fact, I was to teach CA students for a long time. But then this idea came and I thought, why only CA books? Why not non-academic books? Yeah. And then I have some fascination for technology. Although I'm not a techie guy, I love to study technology. ChatGPT क्या है, ये सब मैं पढ़ता हूँ. Now see, reading skill, oratory skill, and technology. Suddenly, Booklet guy was born. This is a new way of coming out with a personal career now. You can customize your career by becoming a rare mix, by combining your special skills. Gone are those days where careers are found on Naukri.com. No, you can create your own personal career. I read another example. I'll give you. Scott Adams ने एक book लिखी है, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big. How to fail at almost everything and still win big. I got this idea of connecting multiple passions from him only. Scott Adams. आपने नाम सुना होगा स्कॉट एडम्स का? नहीं तो अभी आपको समझ में आएगा वो कौन है. So he had a good sense of humor, but he was not the best comedian in the world. But थोड़ा ग्रुप में रहता है ना एक लड़का लड़की जो हमको सबसे ज्यादा हंसाता है हंसाती है, तो वो उनमें से था. He was a good painter, but not a world-class painter like Pablo Picasso or M.F. Hussein. But he used to draw good than most of his friends. And he came from a business background. Although he was not a business tycoon, he came from a business background. Okay. Now, comedy, painting, and business knowledge. Comedy, painting, and business. He combined all these multiple passions, and suddenly Scott Adams is the famous business cartoonist. He invented that idea जहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स में देखो बाजू पे एक छोटा सा एक ड्राइंग रहता है, स्केच रहता है, और नीचे 1 और 2 लाइंस का एक जोक रहता है. हमारे इंडिया में आर.के. लक्ष्मण करता था. डू यू नो दिस? छोटा सा जगह रहता है. ही इन्वेंटेड दिस आइडिया. व्हाई नॉट क्रैक जोक्स ऑन बिजनेसेस और पॉलिटिक्स? सी व्हाट अ फैंटास्टिक एग्जांपल. Now, what happens is when you come out with such rare combination, you are the only person in that category because you have created that category. See, सचिन को एक existing category में best बनना था ना, which is really tough. Cricket is an existing category for years, and becoming the best in that, you'll get a lot of competition. Or there is an easier way.
that you create your own category by becoming a rare mix of 2-3 skills. पर वो अब तक किसी ने किया नहीं होगा, जैसे मैंने जो किया है अब तक किसी ने नहीं किया है. It had a risk, but down the line, 10 years down the line, maybe reading for others, reading for India will be a full-time profession and I'll be known as a pioneer. So every profession today was passion once upon a time. पैशन और प्रोफेशन कुछ अलग चीजें नहीं है. जो शुरू में पहली बार करता है वो पैशन रहता है, और फिर जब हिट होता है वो इवेंचुअली प्रोफेशन हो जाता है. एविएशन इंडस्ट्री, कौन वो दो पागल बंदे थे, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने सोचा था कि इंसान को हवा में उड़ाएंगे. क्रेजी आइडिया, राइट? क्रेजी, कंप्लीट क्रेजी आइडिया. टुडे मिलियंस लैक्स ऑफ पीपल अर्न देयर ब्रेड एंड बटर इन द एविएशन इंडस्ट्री. बट नाम किसका हुआ? राइट ब्रदर्स का. आपके फ्लाइट का पायलट कौन है आपको पता नहीं, लास्ट फ्लाइट का पायलट कौन था आपको उसका नाम भी नहीं पता है. यू आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट? ओके, व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, सो रीड रैंडम का मतलब क्या है कि जो मिले पढ़ो. डोंट पर्टिकुलर जॉनर के इसमें मत अटको. या जो फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्पिरिचुअलिटी हो, कुछ भी, यू नेवर नो दैट व्हेन यू कैन कंबाइन एंड फाइंड सम पैटर्न एंड कम ऑन टू दिस अमेजिंग आइडिया. मैं कितने सारे एग्जांपल दूं कि बुकलेट के जर्नी में मैंने ऐप में जो फीचर्स डाले हैं, जो शेप दिया है मैंने मिशन मेक इंडिया रीड को, वो सब दो चीजों को रैंडमली कंबाइन करके मैंने लाया है. फॉर एग्जाम्पल, I decided that I will borrow the design of WhatsApp from for my app. देखो WhatsApp से मैंने शुरू किया था. If you know my TED Talk, you know my story. I started with WhatsApp. ऐप तो बाद में आया, बुकलेट ऐप. एंड सो सब रीडिंग एप्स में बुक्स का शेप कैसे रहता है? नॉर्मल शेप जो रहता है, रेक्टेंगुलर, वर्टिकली रेक्टेंगुलर. इफ यू नो द बुक्स आर राउंड in booklet app, suddenly it became different. It's not like any other reading app now. राउंड बुक्स देखे कभी आपने? नहीं देखे, राइट? देन ऑक्शन का जो आइडिया आया वो गांधी जी की एक बुक में से आया. वरुण गांधी इज द ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी. ही रोट अ बुक कॉल्ड माय ग्रैंडफादर गांधी. और उसमें एक किस्सा है, वो मैसेज कुछ अलग ही था स्टोरी का, पर मैंने कुछ अलग ही मैसेज लिया. सो गांधी जी वांटेड टू eradicate untouchability and the practice of sati, कि पति बनने के बाद औरत को अपना जान की कुर्बानी देनी चाहिए. इट्स वेरी बैड प्रैक्टिस वाज prevailing in India long back, and Gandhi ji wanted to eradicate these two practices of untouchability and sati. So he decided to have the campaigns across India in all corners. और उसके लिए खर्चा था. He wanted to raise funds for that. तो उन्होंने एक आइडिया सोचा कि मैं मेरा ऑटोग्राफ 5 रुपए को सबको दूंगा जो भी आएंगे. And Gandhi was the hero of that era. There were millions of followers, and they all wholeheartedly uh, saw this very very good excuse to help him by giving 5 rupees. कुछ लोग जानबूझ के दो बार ऑटोग्राफ लेते थे so that I can give 10 rupees to him, and the idea was hit. Now see how I got this idea from nowhere. So I thought, now expenses of booklet make India readers increasing day by day. The readers on booklet app are just increasing by leaps and bounds, by geometrical progression. तो खर्चे तो रिकवर करने हैं. although I am not interested in maximizing profits, I am a social entrepreneur, but still I have to cover the costs. So I thought that I have 4,000 books at home. ठीक है, ऑटोग्राफ वगैरह इतना तो मैं बड़ा नहीं हूँ कि मुझे ऑटोग्राफ के लिए कोई पैसा दे. और या फिर आजकल ऑटोग्राफ की जगह सेल्फी हो गया. बट इन आस्किंग मनी फॉर अ सेल्फी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा. तो हाउ अबाउट अ बुक विच आई हैव ऑलरेडी रेड. बुकलेट गाय ने पढ़ी हुई बुक जिसमें उसके अंडरलाइन है, हाईलाइट्स है, साइड नोट्स है, क्वेश्चन मार्क्स है, या कहाँ कहाँ उसके वो बोर्डिंग पास उसने रखा है एज बुक मार्कर बिकॉज ही वाज रीडिंग इन द फ्लाइट. हाउ अबाउट आई ऑक्शन दैट बुक ऑन सोशल मीडिया एंड आई एग्जीक्यूटेड दिस आइडिया वन डे. आइडिया, सुबह बुक पढ़ी, शाम को आइडिया एग्जीक्यूट कर दिया. ऑन लिंक्डइन और फेसबुक मैंने डाला कि द फर्स्ट बुक आई थिंक वाज हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा. द बुक आई हैड बॉट फॉर 300 रुपीज, वो पूरा यूज करके उसमें कुछ तेल के दाग गिरे थे खाना खाते वक्त, मैंने शायद पढ़ा होगा. कहाँ पे सब मेरा स्क्रिबलिंग है, गुड हैंड राइटिंग, बैड हैंड राइटिंग. दे स्टार्टेड बिडिंग.
300, 400, 800, 1000, 2000, 3000, 4500 को बुक गया. Crazy. And I remember the words of Simon Sinek. He says, people come to you for why you do, not for what you do. People are not stupid to pay 4500 rupees for a book, which brand new book जो 300 रुपए को मिलता है Amazon पे, उसके लिए पुराना बुक 4500 दे रहे हैं. Of course, they are not stupid. They are not giving for the book. Of course, they are going for that higher purpose, for the mission, yet for the intention of making India read. तो सब लोग बोले, अरे मुझे हेल्प करना ही था रे, बस इज अ परफेक्ट एक्सक्यूज नाउ. मुझे बुक भी मिल जाएगी और तेरा हेल्प भी हो जाएगा. सिंस देन एवरी मंथ आई ऑक्शन 2-3 बुक्स. एंड नो, जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनका सैलरी, जो सर्वर का रेंट होता है, क्लाउड सर्वर रेंट, वो भी निकल जाता है. इनफैक्ट हम ये सेशन में भी ऑक्शन करते हैं. आज शायद ऑक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरा खुद का बुक है. तो इसके तो मेरे हजारों कॉपीज है मेरे पास. देयर इज नो पॉइंट इन auctioning, but of course if you want to buy the book, I'll give the details at the end. So read random, आपको समझा कि कुछ भी पढ़ो, don't fall in love with a particular genre of book. read random का दूसरा भी मतलब है कि read random across the platforms. Let's embrace technology. Kindle, no, मेरा बुकलेट ऐप, ऑडियो समरीज, यूट्यूब पे वीडियोस, बुक्स के वीडियोस, PDF, वो सब, they are all part of reading now. All right. If you and I are technology migrants, these 10-year-old kids are technology native. They're literally born with a gadget, literally from the mother's womb. I won't be surprised अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो मोबाइल लेके ही पैदा होगा, तो I won't be surprised nowadays. So अगर बच्चों पे हम इंसिस्ट करेंगे नहीं, हाथ में बुक लेके ही पढ़ना चाहिए, they'll run away from me. Mission Make India will be a flop. Okay, as I said, it's a tool. Mobile is a tool. Okay, उसको ब्लेम करके नहीं चलेगा. तो एक आंटी थी एक सेमिनार में, बोली, हाँ बट अमृत वो किंडल में ना वो मजा नहीं आता है, जो बुक का वो स्मेल और वो जो टर्निंग द पेजेस का जो फीलिंग है ना अमृत, वो किंडल में नहीं है. मतलब अच्छा. सो आई आस्क्ड हर, डू यू वॉच मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स? यस यस आई वॉच. एकदम तुरंत जैसा. मतलब अच्छा, पर वो फिर इतने साल से आप पूरी जिंदगी थिएटर में जाके मूवी देखते थे, फिर वो पॉपकॉर्न, फिर वो AC और वो कोक और पॉपकॉर्न लेके पिक्चर देखना, वो नहीं मिस होता है आपका? एंड शी गॉट माई आंसर, सिलेक्टिव मॉडर्नाइजेशन. हाँ, जो कन्वीनियंट है वहां पे मॉडर्न हो गए. दीज आर ऑल लाइक स्टूपिड एक्सक्यूजेस नॉट टू रीड. और कुछ नहीं है. इनफैक्ट दैट किंडल हैज अ व्हाइट पेपर टेक्नोलॉजी, इट डजंट गिव यू रेज, कोई लाइट के रेज नहीं होते उसमें. इट इज एज गुड एज लुकिंग एट अ बुक. अब कितने भी घंटे पढ़ो, आंखों को स्ट्रेन नहीं आता है. अनलाइक व्हेन यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, 1 घंटे के बाद आंखों पे स्ट्रेन आता है ना. किंडल में ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स बुक कितनी भी घंटा पढ़ो, आंखों पे स्ट्रेन नहीं आता, बट सेम हैपेंस इन केस ऑफ किंडल. सो लेट्स बी मॉडर्न इन ऑल द केसेस एंड नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट. सो ये मतलब है, रीडिंग रैंडम का 2 मतलब है. ओके. And I've already discussed about having multiple books in your pocket, which is no less than a miracle.